हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीकली सेक्टोरल एनालिसिस। लास्ट वीक हमने देखा कि मार्केट ऊपर से काफी नीचे भी आई और 18 नवंबर को इट स्टार्टेड अ बाउंस बैक। मैं थोड़ा सा आपको हार्ली टाइम फ्रेम चार्ट में बताना चाहूंगा। 18 नवंबर को इसने बाउंस बैक स्टार्ट किया जो 23,393 यानी कि 23,400 के करीब से पुल बैक एक स्टार्ट हुआ। दिस पुल बैक लास्टेड टिल द नेक्स्ट डे which was around 23,848. So अच्छा खासा पुल बैक आया 400 450 पॉइंट का निफ्टी में। एंड सडनली यहां से एक सेल ऑफ आया। द सेल ऑफ मेड अ न्यू लो। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था। मैंने आपको बोला था दैट व्हेन दिस सेल ऑफ स्टार्टेड, मैंने क्लियरली बोला था ये सेल ऑफ जो थोड़ा और आगे बढ़ेगा एंड शायद निफ्टी एक नया लो मार सकता है। एंड दिस वाज द प्रीवियस लो एट 23,400 and we made a new low at 23,277. So we made possibly 120 points new low below this particular low. और जब ये लो बना, आप अगर इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को, इस चार्ट को अगर आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी इजीली एंड वेरी क्लियरली कि यहाँ पे हमको लोअर लो दिखा प्राइस में और आरएसआई में हमको वेरी वेरी इजीली, वेरी क्लियरली हमको एक हायर लो दिखाई दे रहा है। सो दिस इज नथिंग एल्स बट पॉजिटिव डाइवर्जेंस। नाउ एक चीज हमको ये समझनी है कि ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस इतना ज्यादा क्यों काम करेगा और इतना ज्यादा पुल बैक क्यों आया। ऑब्वियसली आप सब बोलोगे कि महाराष्ट्र इलेक्शंस आने वाले थे या समथिंग, सम अदर न्यूज वुड बी ऑन द ब्लॉक। फाइन, आई वुड अग्री विद दैट। बट इसके साथ अगर आप एक चीज देखें कि जब अदानी एंटरप्राइज का एक नेगेटिव न्यूज आया मार्केट में, still the market started pulling back. Okay, immediately on Friday the market started pulling back, and this particular pullback came at a time when we were around a support. ये मैंने clearly बोला था that 23,500 is a decent weekly support, 38.20% weekly support. और अगर मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम चार्ट में जाऊं, so daily time frame chart, if you look very very clearly on this day, on this particular day 21st of November, अगर आप ठीक से यहाँ पे देखें तो नीचे एक छोटा सा विक था। ये कैंडल हालांकि एक हैमर नहीं था, बट द डेली आरएसआई वाज बिलो 30। छोटा सा विक नीचे की तरफ था विच वाज शोइंग साइंस ऑफ वेरी वेरी स्मॉल, थोड़ा सा पुल बैक। और फिर दूसरे दिन you can see a very huge pullback, almost close to 537 or 538 points in Nifty futures, और बैंक निफ्टी में almost close to 675 points. So question is ये पुलबैक क्यों आया? ऑब्वियसली मैंने ये शेयर किया आपके साथ। यहाँ पे एक सपोर्ट था प्लस आरएसआई ओवरसोल्ड था, पॉजिटिव डाइवर्जेंस था प्राइस में। एंड ऑब्वियसली इफ यू वांट टू से दैट दिस इज ड्यू टू इलेक्शन रिजल्ट, इट इज अप टू यू। बट मैं जो हमेशा बोलता हूँ, मैं न्यूज ज्यादा ट्रैक नहीं करता। नाउ गोइंग अहेड, क्वेश्चन ये है कि ये पुल बैक कितना चलेगा आगे। देखिए मेरे हिसाब से इन द मंथली टाइम फ्रेम चार्ट वी आर स्टिल इन एन अप ट्रेंड, बिकॉज ये सपोर्ट अभी भी काम कर रहा है। ये वाला जो सपोर्ट अभी भी काम कर रहा है विच इज एट 23,775, दिस इज द 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऑफ दिस एंटायर रैली विच स्टार्टेड एट जून 2022, क्योंकि ये बड़ा चार्ट है, मंथली टाइम फ्रेम चार्ट है। अगर मैं यहां से अगर इसको मैं रिट्रेस करता हूं फ्रॉम अक्टूबर 2023 इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट, तो हमको यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम चार्ट में अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम चार्ट में ट्रेंड अभी भी डाउन है, अभी भी नीचे की तरफ है। दिस इज जस्ट अ मियर पुल बैक। नाउ अगर ये पुल बैक और आगे कंटिन्यू होना चाहता है तो सबसे पहले अगर आप देखोगे दैट देयर इज अ लॉट ऑफ choppiness in this particular zone. So this particular choppiness is resulting into a cluster. It is resulting into a cluster. और ये जो टिप है क्लस्टर का वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 24,000। और अगर गैप अप भी हम खुलते हैं, समझो 24,000 के ऊपर खुलते हैं, then we will see immediately the immediate first resistance for Nifty futures according to me। अगर कोई मुझे पूछे कि सर अगर बड़ा पुल बैक आने वाला है तो कहां तक आएगा, तो मैं बोलूंगा immediately the first resistance which will be hit will be 24,000 and the second one for short term traders जो एक या दो दिन का ट्रेड करते हैं उनके लिए 24,200
एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एंड इफ यू वांट अ बिगर बैंड, आपको एक बड़ा बैंड चाहिए, क्योंकि कभी कभार एक लेवल काम नहीं आता। इफ देयर इज गोइंग टू बी अ मैसिव गैप अप ओपनिंग, देन दिस एंटायर गैप, ये जो पूरा बैंड मैंने यहाँ पे शेयर किया है 24,218 या 24,220 से लेके 24,600, ये पूरा 400 पॉइंट का बैंड जो है वो एक एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा निफ्टी फ्यूचर्स में। ठीक है, सो इफ वी गैप अप, इट इज जस्ट गोइंग टू बी अ पुल बैक। हाँ, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ट्रेड करना चालू करे 24,700 के ऊपर, देन मे बी विल हैव टू रिकंसिडर थिंग्स एंड मे बी रीइवैल्यूएट, देखना पड़ेगा दूसरे सेक्टर्स क्या करें, बट सो फार इट विल जस्ट बी अ पुल बैक। गोइंग अहेड, अगर मैं बैंक निफ्टी में देखूं तो बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में काफी ज्यादा चॉपी है, इट्स जस्ट गोइंग अप एंड डाउन। In daily time frame chart also, a lot of choppiness is visible in this zone. Only thing is थोड़ा सा clarity यहाँ पे आया है because we have been trending down, then one day up, one day down and again a pullback. So overall मैं ज्यादा बैंक निफ्टी के ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, but I would talk little bit more on PSU banking stocks and private banking stocks. So अगर मैं PSU banking stocks के बारे में बात करूं, first of all as a sector, I think this sector is not very strong except SBI. SBI में हालांकि जो पॉजिटिव व्यू बना था, अनफॉर्चुनेटली वो नेगेट हो चुका है, एंड इफ यू चेक द स्टॉक इज ऑल्सो कमिंग डाउन। लेट मी जस्ट शेयर दैट पर्टिकुलर चार्ट विथ यू। ओके, सो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव व्यू बना था, जो भी यहाँ पे बुलिशनेस चार्ट में बनी थी, वो यहाँ पे नेगेट हो चुकी है बाय दिस करेक्शन। Overall, this stock is still better in comparison to charts like you can say PNB या even महाराष्ट्र बैंक, जहाँ पे एक स्विंग ट्रेडर्स ने यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब यू कैन से बेनिफिट उठाया व्हेन दिस पर्टिकुलर करेक्शन वाज हैपनिंग। काफी लोगों ने शायद यहाँ पे शॉर्ट सेल करके पैसा बनाया होगा। इवन यूनियन बैंक, इफ यू चेक, इट वाज अ डिसेंट सेल, नॉट वेरी great, but was okay, you can say. Now, if you have a look at chart like Bank of Baroda was second best to SBI, but even Bank of Baroda has been able to close below this. Yes, हालांकि एक यहाँ पे एक हैमर है और एक बुलिश कैंडल है, but momentum is not very good even in this particular stock. So overall, as a sector, I would say as of now, it's not looking that strong. Now, if I shift to private banking stocks, things will change. If you have a look at the monthly time frame chart, I think things are fine. They are okay. Yes, we do have little bit of shift of momentum on the downside, but once again, I can see that as soon as we have broken this particular support band, prices are trying to pierce this particular now this particular band was a support band earlier, तो obviously भी break होगा तो resistance बन चुका है. So now again prices are trying to go higher, and to do this, the most important stock will be HDFC Bank. Now HDFC Bank, with a viewpoint of short-term traders, I think the stock is looking pretty good. If it starts trading about 1760, 1770, then थोड़ा सा इसमें bullishness दिखने के लिए मिल सकता है in this particular stock. If you have a look at ICICI Bank, even this stock, with a viewpoint of short-term traders, I can say if the stock starts trading above 1294 or even 1300, then some sort of positivity will be visible in the stock on the upside. All right. Going ahead in the energy pack, देखिए energy pack बहुत ही ज़्यादा oversold है, because you can see RSI was at almost below 20 or at 20, and in the weekly time frame charts अगर आप देखेंगे तो हैमर जैसा कैंडल बना है। मंथली टाइम फ्रेम चार्ट पे हम लोग एक सपोर्ट पे हैं, सो हो सकता है कि एक कंसोलिडेशन आप बोल सकते हो, देयर इज अ पॉसिबल। थोड़ा बहुत पुल बैक भी देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पे, इट इज प्रीटी मच पॉसिबल, बिकॉज दिस पर्टिकुलर करेक्शन वाज प्रीटी डीप. Now, if this particular sector pulls back, okay, if this particular sector starts pulling back, I think it will immediately find resistance at 37,640 or 642. और अगर मैं stocks के बारे में बात करूं तो obviously Reliance is one of the stocks which has gone down very much on the downside. Now you can see that in the monthly time frame chart we are still at a support. In the weekly time frame chart we are above
30, but we are near oversold level, and we have been able to see a very very big hammer. मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बोला था कि एक पुल बैक जैसा पॉसिबल है रिलायंस में, बट नहीं हो पाया, एंड रिलायंस वेंट इवन स्लाइटली लोअर, एंड नाउ इट्स ट्राइंग टू पुल बैक. सो देख के ऐसा जरूर लग रहा है कि थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है. नाउ द क्वेश्चन इज, am I going to buy as a short term trader, as a swing trader? The answer is no, because it will just be a pullback, and I am not a person who tries to trade in the pullback. Yes, this is surely possible that अगर ये pullback आगे जाता है तो काफी sharp और थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, because you can see little bit of bullish signs in the weekly time frame chart. It's pretty much possible that can happen, but will I buy in a pullback? The answer is no. And in this entire stock list, दो ऐसे स्टॉक्स है, एक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड सेकेंड वन इज पेट्रोनेट. आई थिंक दीज टू स्टॉक्स आर लिटिल बिट मोर स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू द एंटायर एनर्जी पैक. ओके, मेटल पैक. नाउ मेटल पैक, आई शुड से दैट मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, धीरे धीरे करके मेटल पैक नीचे आता जा रहा है, एंड वी आर एट अ सपोर्ट बैंड. इफ दिस सपोर्ट बैंड इज ब्रोकन ऑन क्लोजिंग बेसिस, जो अभी तक नहीं हुआ है, then you will see a little bit of sell-off happening on the downside in short term. Auto pack, I should say that it has corrected pretty nicely. The momentum is still on the downside. The trend is still down. But if you convert this chart into a line chart, then you will be able to see some sort of positive divergence visible. So हो सकता है कि एक छोटा सा pullback हमको ऑटो पैक में दिखने मिले, and that is the reason जो अशोक लीलैंड के बारे में मैंने एक नेगेटिव व्यू शेयर किया था. बट मैंने बोला था कि ये 210 के नीचे ट्रेड होना चाहिए, बट 210 के नीचे ट्रेड हुआ ही नहीं, एंड इनफैक्ट इट टुक दैट पर्टिकुलर लेवल एज अ सपोर्ट, एंड नाउ इट्स ट्राइंग टू बाउंस बैक ऑन द अपसाइड. फाइनेंस पैक, आई शुड से ओवरऑल एज अ सेक्टोरल चार्ट काफी ज्यादा चॉपी है, जस्ट लाइक you can say the bank nifty, and then there is a sell off. Now it's trying to pull back. मैं एक ही चीज बोलूंगा कि यहाँ पे जो HDFC वाले स्टॉक्स हैं फाइनेंस में, I'll just share these couple of stocks in the finance pack with all of you. Stocks like HDFC Life and HDFC AMC. These two stocks are the ones, अगर रैली आती है फाइनेंस पैक में, then there is a decent possibility कि थोड़ा सा इसमें पुल बैक इन स्टॉक्स में भी आ सकता है. There is no sign as of now, that इसमें पुल बैक दिख रहा है, because there is no bullish candle evident. But why I am saying so is, if you see at the stocks properly, first of all, this stock in the weekly time frame chart or even in the daily time frame chart, it is trading at a decent support. I'll just take this Fibonacci extension, which is holding up pretty nicely. That's bounced back from this Fibonacci extension. And if you have a look at HDFC AMC, then HDFC AMC is again trading at a previous low. So some sort of pullback is possible in this particular two stocks, in case if the finance pack decides to go on the upside. कंजम्पशन पैक मेरे हिसाब से काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है in the daily time frame chart. In the weekly time frame chart, we have corrected beyond 38.20% retracement, and little bit of consolidation in this particular sector is possible. FMCG pack also, it seems it has corrected vertically on the downside. Literally, you can see this is not exactly, but sort of a vertical fall, and now it is trading at the 78.6% Fibonacci retracement. It's also getting support from this beautiful candlestick cluster, and हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, थोड़ा सा पुल बैक FMCG स्टॉक्स में भी देखने के लिए मिले. So if anyone is holding any short positions in this particular sector, then please be very very careful and start trailing your stop losses. Now the talk of the town, infra pack. अगर आपको याद होगा तो लास्ट एक या दो वीडियोस में मैंने बोला था that infra pack as a sector is looking weak, and I had shared my negative view for two stocks. One was ACC, I think somewhere here or here, I don't exactly remember, but could be somewhere here, maybe somewhere here. So from these lows, ACC corrected pretty nicely, and Ambuja Cement also, you can say
इट करेक्टेड. मैंने शायद यहाँ पे कहीं नेगेटिव व्यू इसमें शेयर किया था दैट स्टॉक इज लुकिंग नॉट ग्रेट, एंड आई थिंक बोथ दोनों स्टॉक 14 to 15% नीचे की तरफ करेक्ट हो चुके हैं. ठीक है. So now I'm closing my views on these two stocks. Now going ahead with the IT pack. देखिए IT पैक में मैं काफी दिनों से बोल रहा हूं दैट IT पैक इज वन सेक्टर विच हैज बीन आउट परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली. द रीजन फॉर दैट इज यस, इसमें मोमेंटम नहीं था. इट वाज प्रीटी मच साइडवेज ऑल दिस टाइम. It even went down, went up, again came down, and on the last trading session it again went up. Now यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब बाकी सब सेक्टर्स नीचे की तरफ करेक्ट हो रहे थे, ये सेक्टर कंसोलिडेट कर रहा था. यस, नीचे आया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं द सेक्टर डिड नॉट केम डाउन, इट डिड केम डाउन, but it managed to bounce back very fast. And when the entire market started rallying on the Friday's trading session, it was able to do even so. ऐसा नहीं हुआ कि जब दूसरे सेक्टर्स ने पुल बैक दिया तो ये सेक्टर पीछे रहेगा और नीचे आ गया. नो, इट डिड नॉट हैपन. इट इन फैक्ट कंटिन्यू टू रैली. सो दिस इज अ क्लियर साइन ऑफ अ वेरी स्ट्रांग सेक्टर. और मैंने ऑलरेडी एक स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव व्यू शेयर करके रखा हुआ है काफी हफ्तों से, शायद काफी दिनों से, सॉरी, एंड द स्टॉक्स नेम वाज टेक महिंद्रा. सो यू कैन सी सिंस लास्ट फ्यू डेज टेक महिंद्रा वाज लिटिल बिट ऑफ चॉपीनेस इसमें विजिबल था, बट अब दिख रहा है कि धीरे धीरे करके ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है. सो पॉजिटिव मोमेंटम इज विजिबल. द सेकेंड स्टॉक जो मैंने शेयर किया था आप सबके साथ was Infosys. Infosys मैंने बोला था it's looking positive, but it is not as positive or as strong as Tech Mahindra, and the reason was this particular resistance over here, and you can see as soon as we closed above it, we dipped once more. And मैंने clearly बोला था that whether this dip is going to continue or we'll again go up. So once again, Infosys is giving us a confirmation that it wants to go higher. Although एक चीज मैं बोलूंगा, ये कैंडल मुझे उतना पसंद नहीं है. सो इफ यू हैव अ बिग ग्रीन कैंडल विद लेसर विक्स with little bit more positivity, then I think Infosys will start looking little bit more interesting. One more stock which is TCS. So TCS अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें TCS को, so TCS is trying to come down, pull back, trying to come down, again it's trying to go higher. And if you construct a trend line, ये मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था, there's a sort of trend line support over here. So what I'm trying to say is that this is the previous low. यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ 1 और यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ 2. So we can clearly see that number 2 is higher than number 1 in terms of Dow theory, and this is the previous high जो almost surpass हो चुका है. But yes, if we have one more big green candle with lesser wicks, then some sort of upside momentum will be possible in this particular stock as well. Pharma pack. Now, दोस्तों ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमको ध्यान देना चाहिए. क्यों? I'll go back to Nifty right now. देखिए निफ्टी मैंने बोला था that it will give a pullback. It's just a pullback. But in case, what if it is a total turnaround? Number one. Number two, if it is just a pullback and once again after the pullback, if market starts coming down once again and starts making a new low, if it is a complex correction, हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि जनरली कॉम्प्लेक्स करेक्शंस जो होते हैं मार्केट में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं दैट वी आर इन अ फेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स करेक्शन, बट इफ इट इज अ कॉम्प्लेक्स करेक्शन, तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन में कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हैं, एक या दो सेक्टर्स, और बाकी के सेक्टर्स जो हैं वो करेक्ट करते रहते हैं. So there's a decent possibility that pharma will be one of the sectors that if Nifty starts to go higher, then this particular sector will outperform. You can see there's a trend line support over here. We are also trading at a 38.20% Fibonacci retracement. बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन से स्टॉक्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ज्यादा स्टॉक्स आपको ये सेक्टर में नहीं मिलेंगे मेरे हिसाब से. यू शुड लुक एट Sun Pharma as a short-term trader. Second one, you can have a look at Lupin. Lupin is just trying to pull back. If you can see this thing, it's also trying to bounce back from a Fibonacci extension. And one more is
टोरेंट फार्मा। बट मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, whenever market opens on Monday, please don't become mad and start buying stocks blindly. Please put your own analysis into it, because ये सिर्फ मेरा व्यू है, ये मैं कोई कॉल नहीं दे रहा हूं, ये सिर्फ मैं अपना व्यू बता रहा हूं। हो सकता है कि मेरा व्यू गलत भी हो जाए, so please be careful, put in your own analysis and understand that in case if we open gap up on Monday, does that gains, जो भी निफ्टी में गेन्स दिखते हैं, क्या हम उस पर्टिकुलर पॉजिटिविटी के साथ क्लोज हो रहे हैं, और आर वी ओपनिंग पॉजिटिवली एंड क्लोजिंग नेगेटिवली। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, एंड प्लीज एड योर ओन एनालिसिस इनटू योर ओन पर्सनल ट्रेड्स। Going ahead with the PSE sector continues to be one of the weak sectors, and even if it pull backs as of now, ये सिर्फ एक pull back रहेगा और कुछ नहीं। Reality pack, I should say reality pack is a little bit more different, because reality pack में अगर आप stocks देखोगे तो कुछ stocks outperform कर रहे हैं, कुछ stocks underperform कर रहे हैं, so you will have to take a call on the basis of stock specific strategy. You cannot take a blanket view on the entire sector. एंड मिड कैप अगर मैं बात करूं तो मिड कैप भी पुल बैक कर सकता है, हालांकि इट इज क्लोज्ड बिलो द सपोर्ट और दूसरे सपोर्ट पे आया नहीं है, बट यू कैन सी सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक हैपनिंग इन मिड कैप स्पेस, तो थोड़ा सा और कंसोलिडेशन ऑफ पुल बैक आपको दिखने मिल सकता है। सो whoever has gone short in the mid cap stocks, you should start trailing as stop losses. And before क्लोजिंग द वीडियो मैं इतना ही बोलूंगा कि थोड़ा सा धीरज रखें, बी पेशेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट रेदर देन मैं आज मैं देख रहा था बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की बात चल रही थी, मंडे को गैप अप कितना होगा, या 500 पॉइंट होगा, 200 पॉइंट होगा, 600 पॉइंट होगा, कितना होगा। टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ गैप अप्स एंड गैप डाउन, बिकॉज क्या इससे मिलता क्या है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ gap up and gap down opening, to be very frank. What matters is after the gap up, is market going to stay there, or after a few days is market going to surpass the main resistance? Are we starting a new uptrend, or is it just a pullback, and by hitting this resistance are we going to come down? So if you just forget everything and you just start enjoying the madness which is going to happen on Monday, if it happens, then possibly you will go insane, और ये आप नहीं समझ पाओगे कि मार्केट में एक्चुअली क्या करना चाहिए। सो बी पेशेंट, दिमाग ठंडा रखिए, समझने की कोशिश करिए कि मार्केट क्या करना चाहता है, बिकॉज ये चीज जरूर समझिएगा कि अगर ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, देन ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्स करेक्शंस इज नॉट वेरी वेरी इजी, ट्रस्ट मी। You will have to be very very vigilant, you'll have to be very patient, and watch the market prices very very closely. And one more thing, trade less and trade wisely. Thank you.